Hello everyone, this is Ruby Rathor, your physics teacher. Welcome to all on our online classes. So, students, in this lecture we will study about the uses of spherical mirror. So, let's see student, the uses of spherical mirror. Student, spherical mirror are widely used in our everyday life. We can use different mirror for their different properties. Now we start from uses of our concave mirror. So student, what the uses in which we use our concave mirror? Let's see student. First we have to learn that the image properties of the concave mirror and image properties of the convex mirror. You have already learned that what is the image properties of concave mirror differ from the convex mirror. Now let us start applications of convex and the concave mirror. Okay student. So let's see, this is a solar heater. What is the use of solar heater? Solar heater use the sunlight to heat up the objects. How can it work? ये कैसे work कर सकता है? We know very well concave mirror converges all the light rays at a point which known as the focus. It means it increases the intensity of the sunlight at a one point. We know very well our sun is very far to our earth, so all the light rays comes from the sun will be parallel to our principal axis. This concave mirror, all the sunlight focus at a point and make the heat location. So अगर हम इस हॉट लोकेशन पर कोई भी प्लेन पेपर रखते हैं तो ये कॉन्केव मिरर उस प्लेन पेपर को जलाने की एबिलिटी रखता है. दैट्स वाई स्टूडेंट सोलर हीटर use concave mirror to heat up at an object which is placed at its focus. We can use it to make our roti and the papad. Now concave mirror to view far away object. मतलब ये हुआ कि concave mirror is used to view far away object. How can it do it? ये कैसे कर सकता है? So concave mirror is used in the astronomical telescope. Here a concave mirror converges all the light rays which comes from the object which placed at the infinity. This concave mirror converges these light rays at the focal point. From the focal point, these light rays diverges along the side of the eyepiece. So student, what is the eyepiece? Eyepiece is a lens from which we can see inside the astronomical telescope. We can use a lens as the eyepiece. So this lens should be the magnifying lens. Which mirror or the lens we can use for the magnifying lens? So student, this is the convex lens. About the convex lens we will study in our upcoming lecture. Okay student. Now let us move at the another topic. So the other uses of the concave mirror is used as the shaving mirror और we can say the makeup mirror. हम concave mirror का इस्तेमाल shaving mirror के लिए भी करते हैं, makeup mirror के लिए करते हैं. क्यों करते हैं? Reason being concave mirror give a large image of an object which placed near it. Okay student, ये किसी भी object की बड़ी image हमको दिखाता है, इसलिए हम concave mirror का use shaving mirror में करते हैं. Now you can see that in this image automobiles use its headlight. So student, my question is this, which type of mirror we can use in the headlights of the automobiles? हम automobiles के headlights में कौन सा mirror use करते हैं? So answer is concave mirror. How is concave mirror work inside the headlight of the automobiles? So let's see student, if we place our bulb at the focus of the concave mirror, this concave mirror forward all the light rays emerges from the bulb in parallel direction. So we can use the concave mirror in our automobile's headlight. Now question is this, we have to require this light rays in the broad manner which helps to see the all object present on the road. So which type of device we can use to expand these parallel rays? So answer is reflector. मतलब
हम किसी भी डिफ्लेक्टर का यूज़ अपनी पैरेलल रेज को एक्सपेंड करने के लिए, इट मीन्स फैलाने के लिए कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, हाउ इज द डिफ्लेक्टर वर्क एट in this place? So deflector deflects or the expands all the light rays by the smaller degree. It means जो डिफ्लेक्टर होते हैं वो लाइट रेज को कुछ डिग्री पर फैला देते हैं, which makes us able to see all the things present on the road. Now my question is this: which type of mirror you can use the side view mirror in the automobiles? We will study about this in upcoming lecture. Okay, now look at these images. These are the uses of the concave mirror. You can take the screenshot of this picture. Okay, now concave mirror is used by the dentist to see the bigger image of the teeth of the patients to examine and the diagnosis. Okay, डॉक्टर कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल पेशेंट के दांतों की बड़ी इमेज को लेने के लिए करता है, जिससे वो अच्छी तरह से उसके दांतों का डायग्नोसिस कर सके. ओके स्टूडेंट, सो आई explained all the uses of concave mirror. So student, let us move on the other uses of the concave mirror. These uses are: it is used in optical telescope, it is used to concentrate parallel ray of the sunlight, it is used in the cosmetic mirror or the shaving mirror. You can take the screenshot of this picture. So let us move student. Uses of the convex mirror. How can we use convex mirror in our daily life student? हम convex mirror का इस्तेमाल अपनी daily life में कैसे करते हैं? So student, there are two uses of convex mirror. First, we can see full length image of a tall building or the object or any tree etc. इन द स्मॉल साइज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. मतलब हम किसी भी बड़ी बिल्डिंग की इमेज, किसी भी बड़े एरिया की इमेज या फिर किसी पेड़ की या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट की इमेज, फुल लेंथ इमेज हम छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में ले सकते हैं. दूसरा यूज़ ये है, वी कैन यूज़ कॉन्वेक्स मिरर एज द साइड विंग मिरर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. हम गाड़ियों में जो साइड में शीशे लगे होते हैं उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं. सो हाउ दे वर्क इन द साइड मिरर? कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड द वाइडर रेंज इमेज ऑफ बिहाइंड द ऑटोमोबाइल्स. ओके, विच फैसिलेट्स द ड्राइवर टू सेफ ड्राइविंग. मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर ऑटोमोबाइल्स के साइड में रियर व्यू मिरर के रूप में लगे हुए होते हैं या फिर कह सकते हैं साइड व्यू मिरर के रूप में लगे हुए होते हैं, वो ऑटोमोबाइल्स के पीछे जितना भी ट्रैफिक होता है, जितना भी वाइड एरिया होता है, उसको ईजीली सीन कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर. ऑलवेज रिमाइंडेड, दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल. आपने जनरली व्हीकल्स के साइड में जो मिरर देखे होंगे वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. आप देख सकते हैं उन व्हीकल्स पर कुछ नोटिस लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट जितना आपको अपीयर हो रहा है उससे पास है. ये सेंटेंस आपका इंग्लिश में लिखा हुआ होता है. यू कैन सी दैट द side view mirror of your bike or your car. Okay student, it is curved outward. So this curved outward nature provide it to see the wider field of view. It always give an erect image, so it is very useful in the automobiles. Okay student, it is curved outward, so it has the wider area. These are the other uses of the convex mirror. You can see in this picture. You can take the screenshot of this picture. Okay student, I hope you can understand all the uses of the spherical mirror.